Welcome to the Kashmir Notebook, a special frontline broadcast with Gohar Gilani. This is the 9th episode of the series that began in April this year. In this series, we are going to discuss a burning issue, the issue of reservation, which has sharply divided opinions in Jammu and Kashmir. Let me introduce the panelists. To my immediate right is Miss Ammara Seher Qureshi, who is a PhD scholar, and to her right is Mr. Mubashir Ahmed Naik, who comes from the Chenab Valley and is a working president of the Jammu and Kashmir Students Association. And to his right is a very vocal activist, student activist, who has been speaking on the reservation issue, and his name is Mr. Sahil Pare, and he is a student activist. And then the final panelist is Mr. Abid Jamal, who represents the Gujjar Bakarwal Students Association. Welcome all. Thank you. So I'm happy that everybody is smiling. I know the opinions are very sharply divided. So Ammara, you're a PhD scholar and you come from the general category, Yes. which is also referred to as open merit. Yes. So tell me, this entire debate about reservation, when you hear that such and such percentage, while you are seeking a job or you're competing for a competitive exams, what are the adverse impacts of reservation according to you? How is it hampering you? First, I will start with this noble reservation idea, which wanted to include the excluded group, has inadvertently excluded the open merit group. I will talk about my personal experience. In every stage of my admissions, whether it was I wanted to be a medical student, there also I faced very less opportunities for open merit students. Then, when I started my coaching institute for UPSC, there also I met many students from different background. That's a good thing. But when our exams were being held, I got to know that they have multiple certificates, and they can choose from whatever certificates they want to. And they have the same economical standard, the same educational standard as I have. And that was a demotivation for me. So let me interrupt you here, because for the audiences, so that they understand, what do you mean by they had certificates? Are you referring to that they were using, for example, the RBA category, reservation for backward areas, or the scheduled tribe, scheduled caste, or like people living on the line of control? Are you referring to these kinds of reservations? A friend of mine, Mhm. she was having ALC, IV, as well as RBA certificate. She was having multiple certificates, and she had done her master's from Delhi University. Mhm. She belongs to a very good family, educated family, and her social status is also very good. And the score which I had and she had, we were given the same opportunity, but she can prevail that So opportunity. let's make it even more simpler. So for example, you are preparing for an exam, Mhm. a competitive exam, you got certain marks, Yes. and the cutoff is, like, for example, say 500, so you got 490. Yes. And the other person that you're saying is equally, like, socially not weaker sections, they do not belong to socially weaker sections, but still enjoy certain certificates. How does it impact you personally in seeking a job or cracking an exam? Because first thing, she will get the preference. She Mhm. has the preference that because she has that certificate, she will be in the top list. Mhm. Despite us being the same score holders, she will have more opportunities, and she has the opportunity to choose from different certificates she has. Second thing, it is also demotivating for an open merit student who has the same aptitude and same ability, but being open merit is being a curse for her. Me being a student, as well as me being a female, where females are already having less opportunities, it is very demotivating for an open merit student. So thank you. Let's move to the other side of the divide. So Mr. Mubashir, um, probably the argument is that somebody living, you come from the Chenab Valley, we know how the roads are. There is no road connectivity is not as good as rest of Jammu and Kashmir. There's lack of facilities in terms of, you do not have English medium schools, not as good as, you would find, for example, in Srinagar. You do not have the access to coaching facilities like somebody who is living in other parts of Kashmir, towns and cities. So
I mean, are you pro reservation or are you pro rationalization and reservation? What's your stand on the issue? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस तरह से मैम ने अभी बातें की, मैं बड़ी दिलचस्पी से इनकी बातों को सुन रहा था। और जिस तरह से इन्होंने बातें बताई कि मुख्तलिफ रिजर्वेशंस जो कैटेगरीज, एक ही कैंडिडेट के पास, एक ही एस्पिरेंट के पास बहुत सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाला स्टूडेंट होगा या एस्पिरेंट कोई भी स्टूडेंट होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज। हम भी इस चीज़ के खिलाफ है, हम रेशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, और ना ही हम उस चीज़ के खिलाफ है जो सरकार करना चाहती है। लेकिन खिलाफ अगर हम है, तो हम इस चीज़ के है कि आप बार-बार एक ही कैटेगरी को हैमर नहीं कर सकते हैं। आप एक ही कैटेगरी को बार-बार कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को, जिस तरह से आपने पहले ही कहा, आप चिनाब वैली के बारे में बखूबी जानते हैं, बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं उन चीज़ों के बारे में, वहाँ किन हालात से हम जूझ रहे हैं। उसके अलावा और भी वैसे इलाके जहाँ पर अभी भी बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है लोगों को, तो उन इलाकों से अगर नौजवान उभर कर सामने आएँगे कैटेगरी की मदद से, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं न कहीं ये कहीं ज़्यादती है बाकी स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जो रेशनलाइज़ेशन प्रोसेस है सरकार का, हम चाहते हैं रेशनलाइज़ेशन हो। कोई भी आपको आरबीए का स्टूडेंट, कोई भी आपको बाकी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट, इवन वो रेशनलाइज़ेशन के खिलाफ नहीं है, बट द रेशनलाइज़ेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, इट शुड बी बेस्ड ऑन द सर्वे, इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर जो तरीका होता है। आप इस तरह से तुगलकी फरमान ऑफिस से जारी नहीं कर सकते हैं। सेंसस 11 में हुई है, आबादी वैसी है। जो आरबीए का उस समय ये कोटा दिया गया था, आपको मालूम होगा जब 1990s में इस चीज़ की शुरुआत की गई थी, तो इसमें ये बिल्कुल क्लियर किया गया था कि वो इलाके जहाँ पर अभी भी जो है वो पुअर रोड कनेक्टिविटी है, पुअर रोड कनेक्टिविटी दैट वाज़ वन ऑफ द फैक्टर जो इसके लिए ज़रूरी था। जहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी आप उन इलाकों में देख सकते होंगे कि वहाँ पर हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पर हमारे पास अभी भी लैक ऑफ रोड कनेक्टिविटीज़ है। अभी भी हम बेसिक जो एमिनिटीज़ है हमारी, उनसे हम जूझ रहे हैं, वो हमारे पास मयस्सर दस्तयाब वहाँ पे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कैटेगरीज़ को, हम तो ये चाहते थे कि सरकार जो है वो 10% से 15% हमारा जो है वो कोटा बढ़ाकर वहाँ पे ले जा सकती थी। रेशनलाइज़ेशन ही अगर होता, तो रेशनलाइज़ेशन So, do you come under RBA category? जी, मेरा आरबीए है, और मैं चिनाब बेल्ट से, चिनाब बेल्ट पूरा जो है वो आरबीए कैटेगरी में आता है। और रेशनलाइज़ेशन अगर होगी, हम लोग बिल्कुल उसकी सपोर्ट में है। बट रेशनलाइज़ेशन जिस तरह से अभी अप्रूवल के लिए जो है, इन्होंने अभी जो है वो कमिटी की रिपोर्ट I'll come to that later. Let me stop you here and let's go to Sahil. Sahil has very strong opinions on the issue, and he has been very active on social media as well with his, take on the issue. Sahil, you come from South Kashmir. Yes. You also live far from Srinagar, and as Mubashir was saying, that he's not anti-reservation or rationalization in reservation, but he wants rationalization to be data-driven, scientific, based on some strong data and surveys and research, so that we know the demographic profile of our population. So, what is your basic, what is your main contention? What is the main contention of your argument when you say that open merit candidates or people from general category are the victims here? Okay, thank you. Thank you very much for having me. Let me start with this then. This new policy was brought in last year in March 2024. And it limited our opportunities. So general category population is 70%. 70% population can only compete for 30%. 30% is open for everyone. Even he is eligible for those 30%. He is eligible, she is eligible. So this policy was against the Kashmiri speaking people. They wanted to win the election. They wanted to get into this Pir Panjal area through this road, and they brought this policy. So are you saying that it was a vote bank politics in the name of reservation? Yes. I call it an institutional gerrymandering. They are just shrinking our space. They don't want to. I don't know why they don't want us to become the part of the system through our hard work. So this policy is against Kashmiri. They are just shrinking the space of Kashmiris. And one more thing, Jammu and Kashmir, to be precise, Kashmir is the only region in the whole in the whole country wherein 70% population can only compete for 30%. This is not affirmative action. This is affirmative marginalization. We are shrinking our space. We want to become the part of the system through our hard work. If that is a crime, I don't know why they are just against the hard work, against this system. So we are asking for the rationalization of reservation. It should be based on the adequate representation. For example, if there is a community X and they need the helping hand from the state,
if their representation in the government is 2%, for example, we can make this 2% to 4%. We can make that 4% to 6%, so that their representation is there. But at the same time, our representation is also must. You cannot shrink our space in our own system. For example, there was this cutoff for NEET UG in 2025. It went to 647 out of 720. If a guy who scored 646, he's sitting at home right now. He's fighting the depression. At the same time, his friend from category, he scored 300 and he's sitting in medical college. Okay, it's very interesting. Now, let's hear from Mr. Abid Jamal Doi. You come from, you represent the Gujar Bakarwal Association. So, what are your personal experiences? I suppose you come from Kulgam, which is also South Kashmir. So, Sahil is also from Anantnag, your neighboring district, and you have contrasting views. What problems do you face, and why you want more reservation for your category? थैंक्स सर फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, हमारी गुजर बकरवाल जो जीबी पॉपुलेशन है, इन लोगों के जब इलाके स्टार्ट होते हैं तो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पैन, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की लैक ऑफ फैसिलिटीज़, पानी, बिजली, जो भी सर, सड़कें, वहाँ से हमारी आबादी शुरू हो जाती है। जंगलों में हमारे लोग रहते हैं। सीजनल माइग्रेशन के दौरान हमारे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो इस सीजनल माइग्रेशन के आने जाने में जब लगते हैं तो उनकी एजुकेशन सर जो इफेक्ट होती है। तो इसके साथ साथ सर जब हमारे लोग गाड़ियों में चढ़ते हैं, आ जाते हैं कभी अपने इलाकों से नीचे उतर के, तो जब अगर हम बात करेंगे रिजर्वेशन की और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे तो इट विल रिमेन इनकम्प्लीट। सबसे पहले हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो सीजनल स्कूल्स जो है सर, मोबाइल स्कूल्स के थ्रू हमारे बच्चे जो है बैकों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अब जो बच्चा श्रीनगर, जम्मू या बाकी की स्मार्ट सिटीज़ के स्कूल्स में सर अपने, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द मतलब जो फैसिलिटीज है सर। So you are talking about lack of basic infrastructure, Access to electricity, access to education, access to internet, other facilities that geographical isolation as well. geographical shyness and all these things, ये सारी चीजें इस चीज को हमारी जो पॉपुलेशन है इस चीज को इफेक्ट कर रही है सर, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हर मुद्दे पे हमारे लोग, आप देखें ना सर, कितने लोग हमारे ओपन मेरिट में जो जिस तरह बात कर रहे हैं कि भाई इन लोगों की रिजर्वेशन जो है दैट शुड बी मतलब कम करनी चाहिए, क्या इनको बाकी जिस तरह के सोशल मीडिया जो नेशनल चैनल्स के माध्यम से जिस तरह जो भी बंदा ओपन मेरिट से आता है वो कोई भी बात बोल देता है विदाउट मतलब ऐसा हमारे इलाकों की हालत देखने के बावजूद के बिना शहरों में बैठकर जब नेशनल मीडिया से वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनको जो मन में आता है वो बोल देते हैं हमारे ऑफिसर्स पे कि भाई ये कम नंबर लेके यहाँ पहुंचे हैं, इनके पास नहीं है, दे हैव लैक ऑफ स्किल। तो ये तो फिर सीधा ब्लेम कर रहे हैं ना जिन इंस्टीट्यूट से, वो ये एक पुश होता है सर। रिजर्वेशन हमें एक पुश देती है, हमारे जो टैलेंटेड यूथ है उनको एक पुश देती थी, जेएमसी में वो पहुंच गया, उसके बाद फिर जो जहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं वो ट्रेनिंग तो सेम है ना उनकी। तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सर, तो अगर प्राइवेट आप देखिए ना सर, जब किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब निकलते हैं सर, जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं, it is the possibility of getting job is 40% higher than that of reserved category. So let me bring back Mubashir here. So Mubashir, there is a counter argument from people who belong to the general category, which is that somebody who is benefiting from RBA category or any other categories which are there listed there. So if that family has been living in, for example, a town or a city for maybe 3 decades, 4 decades, and their parents or grandparents have been in the civil services, they have been working as deputy commissioners or divisional commissioners, and then their children still avail the same, benefit from the same category. So what are your thoughts on this, quote unquote, creamy layer of the society, which takes benefit from the category, but are actually the beneficiaries? देखिए सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये सवाल किया कि वो लोग जो शहरों में रह रहे हैं पिछले 20-30 सालों से, उनकी जो है वो गेजेटेड पोस्ट्स पे जो है वो वहाँ पे रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो अवेल कर सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। वो मतलब जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है, जिस तरह से उनको चीज़ें प्रॉपरली मिल रही है उसी तरह से उनको भी मिलती है। मैं इसके साथ एक और चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा। हालांकि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि हम ना तो किसी कैटेगरी के खिलाफ है और ना ही रेशनलाइजेशन के खिलाफ है। चूंकि आपने बात ये की कि वो आरबीए जुमरे से ताल्लुक रखने वाले लोग जो शहरों में आके बसे हैं पिछले 20-30 सालों से, जिनका जो सोशली, इकोनॉमिकली और
एजुकेशनली जो है वो एम्पावर हो चुके हैं। मैं उसके अलावा एक और बात आपकी बात के साथ जोड़ना चाहूंगा। हम तो सरकार को यहीं से कह रहे हैं कि आप लोग आइए, आप देखिए जो इलाके भी जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं, जो अपडेट हो चुके हैं, जो आप बैकवर्ड नहीं रहे हैं, उनको भी एक्सक्लूड कर दीजिए। आप इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को बार बार दोहराते हैं। जिनसे भी मैं पूछता हूँ वो यही कहते हैं कि नहीं जी, सीलिंग लिमिट 50% से ऊपर जो है वो नहीं हो सकती है। आप उसमें देखिए एक्स्ट्रा सर्कमस्टांस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप उनको दे सकते हैं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में खुद ये कहा है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% तक शेयर दे सकते हैं। You're talking about the economically weaker sections. एब्सोल्युटली, हम ये भी कह रहे हैं कि जो इलाके, जो इसमें इंदिरा साहनी में एक ये भी बात की गई थी कि आप लोग जो है क्रीमी लेयर कंसेप्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिए। हम तो वेलकम करते हैं सरकार का अगर ये कंसेप्ट ये जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, ना कि जम्मू कश्मीर में बल्कि अक्रॉस इंडिया ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। जिन्होंने एक बार बेनिफिट ले लिया उनको दोबारा से बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट Fair enough. But let me कोई put भी- you in a spot. कोई भी Sorry, नहीं होगा। let me put you in a spot now, because I asked him a question that if there is, if there are people from the category, but they have been, the beneficiaries of the system for the last 3-4 decades. But on the other hand, there is also a counter argument, which is about the generational trauma. Like, for example, if we talk about the apartheid in South Africa, or the black Americans, how they faced discrimination over the years, over generations in America, and then there was a civil rights movement, or we talk about Nelson Mandela, what he did in South Africa. So what about, is this, do you see, some logic in this argument that there has been a generational trauma, that certain, sections of the society have been kept in the dark, and they have not availed facilities, they lack electricity, basic amenities, clean drinking water, so they somehow deserve this reservation to upgrade themselves for many years to come, so that there is some parity. What are your thoughts on this? When you start with this discrimination, first I will like to say that women from the beginning, from the inception of the civilization, has been discriminated. Where is the reservation for women? Have we included a woman in reservation? Then it should also be a clause for reservation. There is a concept in economy that is growth versus development. If we are talking about the procedure established by law or due process of law, the reservation is supposed to empower the weaker section. But if you only give them the opportunity and don't provide them with health facility, don't provide them with education, don't change the psychology of people, how is the reservation going to fix this thing? It is never going to be fixed. Then for every other section, we will say that this section is marginalized, put them into reservation, and women deserve the most among them. But never women have been given the separate reservation. So I think only reservation cannot fix this generational trauma. It is the psychology of the people, the behavioral change that is must. Have you seen the ST1 category, the Gujar Bakarwals? They have a nomadic Is there also ST1, ST2? There is. The nomadic lifestyle they have. So for their psychology, we should have moving schools. Are there any moving schools for them? Do they avail the benefit of ST1 category? No, they don't. The elites does. And is that going to change the psychology and this behavioral tendencies of people? No. Only education, only big social changes and awareness is going to change. Just the reservation can only give you the opportunity, but they cannot change your thinking. So I think it needs both. So you are like in favor of separate reservation for women? No, I am not in favor of separate reservation for women, because now the reservation has been so much compartmentalized that I would look like that I am victim blaming women. No, women are mashallah very empowered now. They can compete for themselves. But I am just stating if it is about generational trauma. Yeah, I got your point. Sahil, let's come to the politics of it, because I have been following your tweets, your kind of agitation, and your activism also. So tell me, like, when, for example, the National Conference government took over, there was a debate about reservation, and then they formed a cabinet subcommittee, and then some time frame was given, but nothing was made public. Like, even we do not know the content of the report that has been sent to, for the final approval from the Lieutenant Governor administration. And there are talks about rationalization. But in your experience, who has been the political leader or political leaders
who have been supportive of your activism and who have like done something or who have been totally indifferent or apathetic? I think the credit should be given to Agha Sayyidullah Mahdi Sahab. He has been very much vocal. He has been very much supportive from the day one. I remember last year I went to his place in April before the parliamentary election. So I made him understand. We discussed about this issue for like 2-3 hours. I told him about the repercussions, about the impact of this new reservation policy, how it is anti-Kashmiri. Mhm. He understood it and he promised me that I am going to raise this, issue on the floor of the parliament, which he did. After that, he was the person behind this thing when they put it in the manifesto. I think he also came with some people who were protesting Yes, he was the outside the residence of the residence chief of Chief minister. Minister when I was the main guy, Mhm. and he was the leading it. Mhm. So credit where it is given, it should be given. And Agha Sayyidullah Mahdi Sahab, in fact, Sajjad Ghani Lone Sahab, he is vocal. He is vocal. Mhm. Wahid Para Sahab, he is also vocal. Mhm. I want to talk about something else here. Mhm. No, but also tell me about you, like because you have been preparing for these exams for a long time now, Yes, if yes, I so- remember. Yes. So how it has impacted you personally? How it has impacted me? I am sitting with you right now. This is how it has impacted. So you're jobless. I am jobless. I should have been in somewhere. This is how it has impacted. So this 10% which they snatched from us, it has been given to a particular community. Pahadi speaking. Let me tell you something about Pahadi speaking people. Pahadi was not even a language till 1961. It used to be the dialect of Punjabi. So J&K is the only place where this ST status has been given to a community, and there is a criteria, constitutional criteria. If a community that fits in, if like that meets the criteria, then only they should be given the ST status. Geographical isolation, economical backwardness, educational backwardness, and they should be following this indigenous There are practices. certain parameters. There are certain parameters which they have to they should meet, but unfortunately no, it was given randomly just because they wanted to win the election. Are you referring to this soon after delimitation when the Yes. Pahadi community was Yes, given Pahadi the- community, and then there is this B.R. Sharma Mhm. commission. Yes, We have no idea what they have it is written. GD Sharma. GD I am sorry, GD Sharma. Hmm. I have sought this report from Sarkar Mhm. through RTI. I did not get any reply. No reply. What they say is it is not in the public domain. That's why we cannot. They did not invoke any RTI rule. They So just said, since Mubashir is a lawyer also, so we want to know from a legal point of view, like first, how many types of categories do we have in Jammu and Kashmir? First is like the RBA, and then economically weaker sections. Then you have ST1 and ST2. How many more? देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज है जैसे साहिल भाई ने अभी बताया कि ST2 का अभी अभी जो है ये उभर कर आई है जो रेजोरी पुंछ बेल्ट को दी गई है उसके अलावा ST1 ऑलरेडी एग्जिस्ट थी यहाँ पे उसके बाद OBC है हमारे पास ALC है हमारे पास IB है हमारे पास RBA है हमारे पास EWS कैटेगरी है तो कुल मिलाकर 6-7 कैटेगरीज जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी है इस वक्त जो करंटली हम बात अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ज्यादती थी ओपन मेरिट के साथ लेकिन अब रेशनलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो मुझे लगता है कि रेशनलाइजेशन एक जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इसको उस तरह से रेशनलाइज किया जाना चाहिए ताकि हमारे साथ जो बैठे हैं साहिल साहब बैठे हुए हैं ओपन मेरिट से ताल्लुक रखते हैं इनके साथ भी जो है वो जस्टिस कहीं ना कहीं हो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ जो है वो ज्यादती हो हम इसके हमेशा जो है वो इसके पक्ष में रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी के साथ ज्यादती ना हो और हम चाहते हैं हम सरकार का वेलकम करते हैं इस चीज में कि वो रेशनलाइजेशन करे जिन लोगों को डबल कैटेगरीज मिल रही है जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं ALC का भी ले रहे हैं वो IB का भी ले रहे हैं और उसके बाद ST2 का भी जो है उनको वो दर्जा मिला है So are there people also who take benefit from multiple categories? एब्सोल्युटली जो Okay. रेजोरी और पुंछ का इलाका है उनके पास कैटेगरी कौन सी थी पहले हम्म। जो अभी भी वहां पे बॉर्डर इलाके में कुछ लोग रहते हैं उनके पास ST2 है और ST2 का हमें ये समझ हालांकि मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मुझे क्राइटेरिया उनका समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस You want to know more details about it? चूंकि आप खुद ही जानते हैं कि चिनाब रीजन चिनाब बेल्ट जो है वो इतना पिछड़ा हुआ इलाका है अगर आप रीजनल बेसिस पर दे रहे हैं तो चिनाब भी जरूर करता था ST2 अगर आप लिंग्विस्टिक बेसिस पर दे रहे हैं तो हमारा इलाका जो है वो ST2 रिजर्व करता था क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी जबानें We recently witnessed also the cloudburst tragedy. Absolutely. There are road accidents on a daily basis. There is a कितने आइसोलेट हैं हम जो है वो रेस्ट ऑफ स्टेट से हम लोग इन इलाकों पे हम बाला इलाकों पे रहने वाले लोग हैं जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते थे ST2 और हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप
चिनाब बेल्ट को ST2 में डाल दीजिए, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। आप 10% जो RBA में दे रहे हैं उसको काट के जो ओपन में डाल दीजिए। हमें उन 10% में जो आपने सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, राजौरी और पुंछ को दिया है ST2, उसमें डाल दीजिए हमें। हमारा जो है वो हेडेक खत्म हो जाएगा, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और उन 10% में भी जो है RBA को ऐड कर दीजिए, RBA का जो कोटा है वो ओपन मेरिट को दे दीजिए। So Sahil, इससे कोई एतराज नहीं। Sahil, how I look at it is like, for example, you belong to open merit, and we have two candidates here who are from the open category, General and then category. you have also two who are from the reserved. But no one seems to be happy. So in a way, it is affecting the youth of Jammu and Kashmir, boys and girls, in different ways. So now, tell me, Abid Saab, what are your concluding thoughts and what are your demands in if the report if there is rationalization, some kind of rationalization, because I don't want to have any debate on speculation. We don't know because nothing is in public domain. So what are your demands and what are your concluding thoughts? सर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स है और जो भी यंगस्टर्स है, एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने सीधे कहा है देयर शुड बी अ कॉस्ट बेस्ड सेंसस, जिसमें हर तबके को पता चला कि हम कितने लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। So demographic profiling. देयर शुड बी अ कॉस्ट बेस्ड सेंसस सिंपली, और हमें भी पता चले हाउ मच वी आर इन नंबर्स, एक रियल नंबर काउंट को, उसके हिसाब से परसेंटेज हर तबके को अपनी अपनी परसेंटेज मिलनी चाहिए। दिस इज द सिंपल थिंग। और रैशनलाइजेशन से पहले कॉस्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए, जिससे पता चले हर तबके को, हर कम्युनिटी को कि हमारे कितना नंबर है, उस नंबर के हिसाब से उनको। So based on the total number of population from each caste each caste. and each category, so that there is rationalization becomes simpler. So Sahil, I hope that you find some ways and find a good job for yourself, because you're a well deserving candidate, and I have followed your work also. So tell me your concluding thoughts, and if there are some things which you have missed until now which you want to speak The about. rationalization should happen, but it should be, it should be based on the adequate representation. It should happen, and they should keep minimum 70%, 65% to 70% for open merit, because it is open for everyone. Everyone can compete. And third thing is creamy layer concept should be applied. These top class bureaucrats, top class IPS officers, top class political families, they have hijacked this system. They are living in cities like Srinagar and Jammu. Their kids, they go to top class schools, they go to top class college. When they have to sit in the competitive exam, they use this powerful card reservation. They just score 200 or 300. At the same time, I have to score 650, but still I will sit at home. Their kids will go to the medical college, engineering college. They will become bureaucrats. This is unfair. Creamy layer concept should be there. It should be applied across that, because nobody is above the law, and you have to respect the merit. Otherwise, institutional, they will collapse. Healthcare, bureaucratic system, police system, you have to respect the merit. There, you have to strike the balance between merit and the social system. Is it also a danger of in future, like for example, there will be a civil strife? Yes. Because of people will not have no jobs. Exactly. I'll tell you one more thing. In Kashmir, we don't have any private sector. We don't have any corporate presence here. No manufacturing base. You know what is the status of this tourism. So I don't understand. We are expecting you, where will the youth go? The youth of Kashmir. We have nowhere to go. So government is the primary source of employment. But unfortunately, you are shrinking our space. I don't know, why do you hate this merit? We are not asking for any reservation. All we are asking for is level playing field, fairness. By the way, I'll tell you one more thing. I come from a generation, my generation grew up in Kashmir between classrooms and curfews. From how many years have you been, taking part or sitting in competitive examinations or seeking jobs? 6-7 years. And you have not found one. I have not found. That's why I'm sitting here. I'm telling you. So, Mubashir Saab, you tell me your concluding thoughts. Maybe you want to add something to what you have already said. देखिए, जिस तरह से अभी तक की डिस्कशन में बातें पता चली हैं, मैं पर्टिकुलरली RBA जुमरे से आता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं उनकी ही बातें यहाँ पे करूं, चिनाब रीजन की अगर मैं यहाँ पे तर्जुमानी ना करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी उन लोगों के साथ होगी जिन्होंने ये भरोसा जो है हम नौजवानों पर जताया है। हमारी कौम जो बहुत बल्कि ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद से ही जो है वो अभी भी आइसोलेट है बाकी लोगों से। तो अगर मैं यहाँ पर उनकी तर्जुमानी ना करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जाती होगी। साहिल भाई ने कहा कि कैटेगरी के लोग जो है वो 300 मार्क्स करके जो है वो सीट हासिल कर लेते हैं। तो इनकी जानकारी के लिए भी मैं एक बात बता दूं, अभी कांस्टेबल का जो है वो रिजल्ट आया था, जिसमें RBA कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो सिर्फ ओपन मेरिट की कट ऑफ से 1.5 पॉइंट ज्यादा 1.75 मार्क्स का जो है वो अंतर था। कहीं ना कहीं जो है वो
कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, हम लोगों को भी जो है वो compete करना पड़ता है, तो लिमिटेड सीटें हमारे लिए भी अवेलेबल होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रेशनलाइजेशन और रिजर्वेशन कोई बुरी बात नहीं है, और जो रेशनलाइजेशन सरकार करना चाहती है, मैं आपके माध्यम से उनको तो उन तक all of you, do you want a report to be made public, all of you? Exactly. क्योंकि ऐसे होना चाहिए। देखिए अभी जो चीजें हैं स्पेकुलेशन पे जो है वो बातें हो रही है, बट गवर्नमेंट जहां जहां हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमारे डोमेन में जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे, वी विल नॉट गो, दैट विल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस, जो उनके डोमेन में सब्जेक्ट ही नहीं है, उन पे हम बात नहीं कर सकते हैं, बाकी कैटेगरीज को हम नहीं छेड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट के तौर पर 2-3 कैटेगरीज ही रहती हैं, उसमें भी आप जो है वो एक ही कैटेगरी को जो है बार बार एम्बराइज कर रहे हैं। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से ये यहाँ से एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप इसको जो है वो रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, ना आरबीआई का कोई जो है स्टेक होल्डर आपके इस डिसीजन के खिलाफ होगा, लेकिन दैट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रू साइंटिफिक डेटा। वो जो है साइंटिफिक फैक्ट्स पे होना चाहिए, वो सर्वे पे होना चाहिए। आप देखिए कि वो पॉपुलेशन अगर हम लोग जो है वो बैकवर्डनेस से बाहर आ चुके हैं, तो हम खुद वेव ऑफ कर देंगे अपनी कैटेगरी। So the last census has been done in 2011. 11 में जो है लास्ट That is the latest. पर आप जो है अभी रिजर्वेशन जो है वो हटाया बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग उसी को बेस बना रहे हो, तो मैं कहीं ना कहीं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टेक होल्डर से बात करके आपने अगर रेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है, तो आप पब्लिक डोमेन में उसको लाइए, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठकर जो है इसको रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफी है, ये पहाड़ी लोगों के साथ नाइंसाफी है, चिनाब बेल्ट के साथ नाइंसाफी है, ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां तक अभी भी जो बेसिक कम्युनिटीज है उससे वो महरूम है। एक और पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार जो है वो आपके माध्यम से जो है वो सुनती है, क्योंकि इस तरह तो मुझे लगता है कि उनके कानों तक जू नहीं रेंगती है, लेकिन जो न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, जो बात पब्लिक डोमेन में आती है, जब ज्यादा बातें सुनती है, तब भी जो है वो सरकार इन चीजों को सुन रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ST2 का दर्जा दिया गया है, हमारा एक सजेशन रहेगा सरकार को कि चिनाब बेल्ट को आप ST2 में ऐड कर दीजिए। आप देखिए क्राइटेरिया क्या है ST2 का, हम तो उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, वी आर एलिजिबल फॉर दैट वेरी क्राइटेरिया। अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो खत्म हो, आप अपनी सियासत से बाहर निकल कर देखिए, आप ग्राउंड रियलिटीज को चेक कीजिए, आप देखिए कि चिनाब का बहुत बड़ा वो जो इलाका है, वो जो खिता है चिनाब है, वो डिजर्व करता है ST2। आप ST2 में हमें ऐड कर दीजिए, बाकी चीजें जो है वो आप So let me now come to Seher, Amara Seher Qureshi for final thoughts. So there have been like a lot of views as expected on this topic. So tell me, have politicians listened to your concerns, people from your category, being a girl, being a woman, and being from the open merit category or open category, or general category, have people in the politics across the ideological divide given you a patient hearing? Have you like made some representations to them? What have been your experiences? For me, I think the reservation issue itself has become a political tool. Everyone in the reservation, be it vertical reservation or horizontal reservation, is saying the same thing. They are saying that we are the victim of reservation. Why is it so? If the politicians are there to secure reservation, then why are we all complaining about the implementation of reservation? I think this reservation issue should be rationalized in such a way that both the psychological effect of it and the social effect of it will incalculate the collective responsibility in people and increase the productivity of everyone. There should be democratic decentralization at village level. Only and only when there will be democratic decentralization and upgradation of village level, then the underprivileged people will have they will have the equity. Because only giving reservation and not providing them the basic facilities is also shrinking the open merit people. Because they also deserve, just because they are having the facility doesn't mean that they should be marginalized. It is also injustice. So to make this reservation policy fair, we should first look at the ground reality. If we have rich rural area, then only we can have rich urban areas. Then only this migration will end. Then only this pledge of reservation will end. So we should also think about the social impact of reservation and the due process of reservation. Reservation was based to be temporary so that we can upgrade the social status. But it has, in many cases I see, it has given a boost to the sedentary lifestyle. And it has
almost every section of the reservation are having this problem. They will say everyone is a victim of reservation. Everyone seems unhappy. So I thank you for your concluding thoughts. So this has been like, you heard to all kinds of opinions. So the conclusion seems to be that nobody is against the rationalization of reservation, but the fundamental argument is that any rationalization should happen. It should be data driven. It should be, there should be some science behind it. There should be some exhaustive research behind it. And also there should be a demographic profiling of every section of the society. So we hope that powers that be and people at the helm are listening to these voices, these young voices, so that they're not, desperate, they're not jobless. They find, their skills are used somewhere where they deserve to be. Thank you very much for watching this episode.